इस वीडियो में हम कवर करेंगे अर्बन फ्लड से रिलेटेड जो आर्टिकल्स न्यूज़ में आ रहे हैं विच एक्चुअली टॉक अबाउट कि कहाँ पर गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, व्हाट आर द गवर्नेंस चैलेंजेस, देन व्हाट आर द climate change, how is it related to climate change, what are the governance challenges, right? How are the urban civic administration, how they have faltered, right? Urban planning, इन सब में आप इस टाइप के एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो, राइट? आपके GS2 में गवर्नेंस वाले पेपर में, GS3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले पेपर में आप इस टाइप के एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो टू सब्सटैंशिएट योर आंसर, राइट? सो हियर इज़ द आर्टिकल which talks about the reasons given by MCD which has led to the basement flooding of a coaching in Old Rajendra Nagar, which has led to the death of 3 students. So we'll talk about what actually went wrong, right? And then here you can see that capital submerged, mother son drowned in drain, right? So extremely heavy rainfall that happened in 31st August or in abhi recently 3-4 days back. So that has led to clogging and clogging of drains, right? And water logging in several parts of Delhi, Noida, Delhi NCR, right? So here you can see in this article that there is a chart which has come that East Delhi, it saw 119 mm rainfall in a day. Gautam Budh Nagar 118 mm rainfall in a day, right? And we know that our cities, they are not capable of taking this much amount of rainfall in such a short span, and जिसकी वजह से we see that the roads are waterlogged, right? जगह जगह पे पानी भर जाता है, traffic system gets halted, right? So होता क्यों है ऐसा? Because we know that the natural drainage systems, they have been encroached, right? उसके अलावा जो हमारे storm water drainage system है, they are not scientifically planned, राइट? एंड दैट लीड्स टू व्हाट, जब पानी बरसता है तो रन ऑफ बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड देन आवर ड्रेनेज सिस्टम इज़ नॉट केपेबल टू टेक दैट मच ऑफ लोड, बिकॉज ऑफ विच हमें देखने को मिलता है कि हर कहीं पानी भर जाता है, एंड देन उसकी वजह से कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, राइट? हेल्थ चैलेंजेस हैं, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, एंड देन ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स, देन ट्रांसपोर्ट दैट कम्स एट हॉल्ट, तो ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस है विच ऑल्सो अफेक्ट्स इकोनॉमी एंड द GDP, राइट? देन पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक लाइफ, right? We see that people getting electrocuted, then people are drowning, so that's the pathetic condition of the drainage system, right? And that also exposes the loopholes of the urban civic administration. So what is the need of the hour? We need a better urban planning system, right? We need better stormwater drainage systems which are scientifically planned, right? आपको देखना पड़ेगा that catchment area कैसा है, राइट? आपको उस हिसाब से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज को डिज़ाइन करना पड़ेगा. यू हैव टू फैक्टर इन द लोकल जियोलॉजी, यू हैव टू फैक्टर इन द हाइड्रोलॉजी of the region, local hydrology, to plan stormwater drainage system, right? Then you also have to ensure that there are natural drains that are there and they are not encroached. You have to also plan urban parks. You have to ensure that the city is green enough to take the load, right? To take the load that this kind of amount of rainfall, if it is happening, so we can actually make the city more spongy, right? Where the cities can absorb water, so that will also lead to groundwater recharge, right? So groundwater recharge will actually help solve the problem of drinking water, which several areas don't have. Like we have covered the case study of Sangam Vihar in one of the lectures of urban flood, where we have talked about that area gets flooded during the monsoons, but the area does not have safe drinking water, clean drinking water. There is shortages of that, and then there is all that tankers economy, right? So we have to ensure that कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है और जो ग्रे वाटर पाइपलाइंस कैरी करती है वो मिक्स ना हो, सो दैट वाटर कैन बी सक्सेसफुली आप उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें. सो इस टाइप के एग्जाम्पल्स, इस टाइप के चार्ट्स में से आप 1-2 एग्जाम्पल्स ले करके अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, राइट? सो हियर सिविक गवर्नेंस, दिस कम्स इन योर GS पेपर 2. इसमें भी आप इसको बारे में बात कर सकते हैं. देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट इन GS पेपर 3, राइट? सो व्हाट हैज़ हैपेंड
inadequate civic administration, lapses from civic authorities. In this case, building bylaws, like in this case study of old Rajendra Nagar coaching basement flooded. So we have seen that the building bylaws were violated, fire norms were flouted, right? And the coaching and several coaching and libraries were running in the basement. So these laws were violated. And then there was no civic administration system in place. Although administration is in place, but then no proper check was executed. And that's why it led to flourishing of these coachings, etc. in basement. Then poor urban planning and engineering flaws. Now what are the engineering flaws? So इस आर्टिकल में इसी की बात करी गई है. जो सबसे पहले पेज पे आर्टिकल है, saucer shaped roads, drains blocked by ramps. So these are the example of poor engineering system. How? A section between Pusa Road and Shankar Road is in saucer shape. It is like this, right? 2 feet deep saucer shaped section with deepest point near Rao IAS coaching. अब सॉसर शेप है, इसका मतलब यही है कि ये पानी जो है यहाँ पे डीपेस्ट पॉइंट पे ये पूरा इकट्ठा होगा ना. सॉसर शेप है, ये क्या है? डिप्रेशन है एक तरीके का. सो दैट इज नेचुरल दैट वाटर विल come from higher regions towards this and get collected in this region. So Rao IAS coaching के सामने इसका deepest point है and it is about 2 feet deep saucer shape section, right? So who's यहाँ पे ये Rao IAS के सामने सबसे गहरा है. Then secondly, what happened? Splash of water due to a vehicle passed from this region that has led to flooding in the basement. Then there are several ramps made over buildings. They are constructed, so that leads to what? Clogging and encroachment of storm water drain. Proper cleaning नहीं हो पाती है, आपने encroach कर रखे, तो उसकी वजह से क्या? अब अगर आपके storm water drains already choked हैं, साफ नहीं है, गंदे हैं, भरे, तो उसमें पानी जाएगा कैसे, right? Then the illegal construction in the region. All of these factors accounted for such mishappening that has taken place. So World Bank की यहाँ पे रिपोर्ट है that 40% of India's population will live in urban areas by 2036 and Delhi में by 2040 population that will be around Delhi की 28 to 30 million. So such is the population pressure that is going to be in the region. Already there is huge enough population pressure, right? And then we talk about that Delhi Master Plan 2040 that has came out in 2021 but still उसको notify नहीं किया गया है, right? This plan identifies कि low catchment points क्या हैं, right? दिल्ली को 3 catchment areas में बांटा गया है. So it has identified low catchment points but still कोई measure नहीं लिया गया है so that proper storm water drainage हो सके and these low catchment areas are not flooded, right? So that is the issue. So हमें यहाँ पे way forward क्या हो सकता है? Way forward हो सकता है that there are strict lines of accountability as in the case कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिली, राइट? वेयर द अथॉरिटीज आर ब्लेमिंग ईच अदर दैट इसमें हमारा रोल नहीं था, इसमें इनका रोल था, इसमें इस डिपार्टमेंट का रोल था, हमारे पास एडिक्वेट पावर्स नहीं है. सो इस यहाँ पे आपको अकाउंटेबिलिटी प्रॉपरली फिक्स करनी पड़ेगी, राइट? एंड दिल्ली को आपको ज़्यादा पावर्स डिवॉल्व करनी पड़ेगी सो दैट accountabilities are fixed and they can take proper steps to ensure that such type of events they don't happen in future, right? And then we also need better planning as per local needs, as per local hydrology, as per local geology. We have to plan that, right? So this was a case study in one of the articles that has come in newspaper recently, Buenos Aires. So it's a flood prone area, it's in Argentina, right? So this has used what? It has used sensors over 30,000 stormwater drains that gives early warning, right? So it is what? It is a technological solution. So जब आप अपने आंसर्स में solution बता रहे हो तो tell that ये हम urban planning का एक solution है, then technological solution, technology कहाँ पे आप कैसे use कर सकते हो, उस टाइप से आप अपने examples को use करो. So यहाँ पर this article came yesterday in newspaper that when the clouds gather, so behind India's monsoon woes lie poor civic maintenance, aging infrastructure and the failure of policymakers to make essential connections between urban planning and climate change, right? So why are the Indian cities never prepared for monsoon, right? Because हमारा drainage system that is ill planned, that is not properly maintained, right? And the runoff that hardly has any outlet,
because of which the water accumulates, and we have seen that the low lying areas, they are inundated every time in during this season, right? And because of climate change, what we are seeing that hyper local torrential rainfall हो जा रही है, right? 119 mm 120 mm rainfall within 24 hours. वायनाड में भी यही देखने मिला, दिल्ली में भी in parts we have seen this. So that leads to what? That leads to such event. So that is meteorological factor. And यहाँ पर in this article they have talked about कि दिल्ली में जो past cities था, historical Delhi, that was situated on elevated plain, right? Which allowed, जब आप obviously ऊंचाई पर हो तो पानी हमेशा lower gradients के lower side move करेगा, so पूरा का पूरा पानी drain out हो जाता था towards the low lying areas, and the city was on elevated plain. But during the Lutyens time, during the Britishers time, the city was made in radial pattern. Radial pattern का क्या मतलब होता है कि ये एक सेंटर है, सेंटर प्लेस है, सो इसके अराउंड रेडियल पैटर्न में सेटलमेंट हो रहा है. दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2. सो इस तरीके से रेडियल सेटलमेंट है, ब्लॉक वाइज सेटलमेंट है. तो आप यहाँ की जियोलॉजी को फैक्टर इन नहीं करके, टेरेन को फैक्टर इन नहीं करके इस टाइप से सेटलमेंट हुआ है, राइट? सो अर्बन एक्सपेंशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर creation have rarely followed the natural contours and inclines of the city, right? So यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया मिंटो अंडरपास का. सो मिंटो वॉज वन ऑफ द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हमने पढ़े हैं, राइट? सो ही वॉज वन ऑफ द गवर्नर्स. सो वन ऑफ द फर्स्ट एरियाज दैट बिकेम रिस्पेक्टेबल फॉर द रेंज इन दिल्ली, and for instance it is a depression bounded by elevated areas. तो obviously जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा. and the neglect of hydrology has pushed with vastly different geological structures. Master plans, they rarely factor in informal settlements including slums, dwellings of community. So slums, they are also a reality of urban areas, राइट? सो आप स्लम्स को मास्टर प्लान्स में फैक्टर इन क्यों नहीं करते हो? दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज ऑफ अर्बन सिविक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? एंड इन प्री मॉडर्न दिल्ली कई सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती थी विच यूज टू फ्लश आउट द स्टॉर्म वाटर, राइट? अरावलीज एंड ड्यूरिंग द मॉनसून्स दे बिकम द स्टॉर्म वाटर आउटलेट्स. सो दीज फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स वर देयर, दे स्विफ्टली ड्रेन्ड द वाटर, राइट? बट आज के टाइम में क्या है, मोस्ट ऑफ दैट स्ट्रीम्स आर ईदर बिल्ट अप, राइट? दे आर ईदर एनक्रोच्ड और दे आर रनिंग एज गंदा नालास, राइट? सो उसी तरीके से एक इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है जरहालिया नाला इन करोल बाग, राइट? अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम राजेंद्र नगर इट बिकेम वन ऑफ दीज गंदा नालास. टुडे दैट ऑल्सो हैज़ बीन कवर्ड. सो इस टाइप का एग्जाम्पल भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट? जरहालिया नाला, सो दैट यूज टू बी वन ऑफ इन द ओल्ड टाइम्स small stream in Karol Bagh. Now that also has been covered. So this is what? This is anthropological factor again. So we need such natural drains, we need such natural urban parks for a better urban infrastructure to deal with such problems. So this was it for this lecture. Thank you.